So previously we were doing photoelectric effect. थोड़ा सा थ्योरी का काम बच गया था. इंशाल्लाह आज वो कंक्लूड हो जाएगा. So this was the last working that we did before the vacations. इस वाले पॉइंट पे हमने स्टॉप किया था. So if you have your notes with you ना, so I guess आप जरा कंपेयर करके देख सकते हो कि this was the last working where we had stopped in the previous class. So जो थोड़ी सी रिमेनिंग वर्किंग है ना रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो भी आज कंक्लूड कर लेते हैं. दिस वर्किंग कंप्राइजेज 50% थ्योरी है और 50% कैलकुलेशंस है. सो थ्योरी वाला पार्ट पहले करा देता हूँ, उसके बाद आई विल मूव ऑन टू द कैलकुलेशन वाला पार्ट और होपफुली फिर आज इसको कंक्लूड कर लेते हैं. ऑल राइट. So I'll shift on to a new page because as I said, this was the working जो हमने before the vacations करी थी. All right. So the main heading will still be quantum physics continued. और जो थ्योरी का पोर्शन डिस्कस करना है ना, उसके अंदर एक तो ये चीज है कि what is the significance or the importance rather of photoelectric emission. So the importance or rather the relevance of photoelectric emission is that photoelectric emission provides us with the evidence that electromagnetic radiations exhibit a dual nature. That is, electromagnetic radiations exist both as waves as well as particles. Okay, so this last statement is kind of relevant, that photoelectric emission provides us with the evidence that electromagnetic radiations exist both in the form of wave as well as in the form of particles. अब ये evidence कैसे generate हुआ था, उसकी wordings मैंने लिखी हुई है. So the main heading is dual nature of electromagnetic radiation. ये note learn कर लीजिएगा because exams में बहुत frequently आता है. So 4 to 5 marks का ये note आता है कि how can we establish the dual nature of electromagnetic radiations. So मेरे साथ साथ wordings पहले देख लेना. Sorry yaar. It was initially believed that electromagnetic radiations only had a wave properties. If wave nature is used to explain the phenomena of photoelectric effect, then any frequency, even less than f naught, if exposed for a sufficient amount of time, would have eventually caused photoelectric emission to occur.
तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? रिमेंबर, वेव्स एग्जिबिट अ फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन। एएस में किया था। द टर्म सुपरएम्प्लीट्यूड्स को या अपनी इंटेंसिटीज को एड अप कर सकती है. So if electromagnetic radiation only had a wave nature, if happened is that any frequency, even if it was less than f naught, if that frequency was exposed for a significant amount of time, तो होना ही चाहिए था कि सुपरपोजिशन की बेसिस पर जब आप बहुत देर तक के लिए एक ही फ्रीक्वेंसी को एक्सपोज करते, and even if that frequency would have been presumably less than f naught, तो based on superposition एनर्जी आपकी आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती रहती, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता रहता, इंटेंसिटी इंक्रीज होती रहती, और इवेंचुअली एक पॉइंट ऐसा आता कि जब एमिशन होना स्टार्ट हो जाती. सो इफ electromagnetic radiations only had a wave nature, then based on phenomena of superposition, any wavelength or any frequency, even if less than f naught, if exposed for a sufficient amount of time, would have eventually caused photoelectric emission to occur, because based on superposition, the energy of the incoming electromagnetic radiation would have added up together, causing the intensity or the amplitude to increase until eventually, when sufficient energy was reached, to emission ho jati. This, however, was not the case. And the fact that the process was observed to be an instantaneous process, and also the fact that the process only occurred when the incident frequency was greater than f naught, this provided the evidence that electromagnetic radiations also exhibit particulate nature. That is, they also behaves as particles. And this led to the term wave-particle duality, that is, the dual nature of electromagnetic radiations. Okay, so let me repeat myself. The relevance of photoelectric emission is, or the importance of photoelectric emission is, that photoelectric emission provides evidence for the fact that electromagnetic radiations exhibit a dual behavior. That is, all electromagnetic radiations also have wave-like properties, and they also have particulate nature. That is, they behave as particles as well. अब ये evidence कैसे पता चला था? So the wordings are, it was initially believed that electromagnetic radiations only had wave properties. If wave nature is used to explain the phenomena of photoelectric effect, then any frequency, even if it is less than f naught, if exposed for a sufficient amount of time, then based on the phenomena of superposition, the energy would have added up to an extent कि eventually थोड़ी देर के बाद emission हो जाती. But in reality, that was not the case. And the fact that the process was observed to be instantaneous, and the process only took place when the incident frequency was greater than f naught, this provided evidence कि electromagnetic radiations के अंदर photons exist करते हैं. And this also provided evidence that photons behave as particles. Hence the term wave-particle duality, that is, the dual nature of electromagnetic radiations. So in the exams, if they ask you, तो ये पूरा का पूरा paragraph kind of on and off पूछते हैं, तो इसको appropriate form में मैंने लिख दिया है, इसकी wordings को kind of learn कर लीजिएगा. ठीक है, so the term wave-particle duality refers to the dual nature of electromagnetic radiations. और dual nature का कैसे पता चला? तो ऐसे पता चला था कि if electromagnetic radiations only had a wave nature, then based on superposition, any frequency, if exposed for a very long amount of time, then due to superposition,
the energy would have added up together, accumulated together to an extent that eventually it would have resulted in photoelectric emission to take place. In reality, however, that was not the case. And the fact that the process that was occurring was known to be an instantaneous process, and it only took place when the incident frequency was greater than the threshold frequency. This provided scientists with the evidence for the existence of photons. And since photons were able to interact with the electrons, thereby causing the emission, तो ये पता चला था कि photons particles की तरह behave करते हैं. And this finally led to the conclusion that electromagnetic radiations have a dual nature, hence the term wave particle duality, that is, dual nature of electromagnetic radiations. In fact, Einstein को जो Nobel Prize मिला था, that was because of this idea that he was able to prove the fact that electromagnetic radiations exhibit a dual nature. Now, extending this idea further. So later on, अच्छा before I continue further ना, एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बहुत frequently ये भी आता है कि in the exams if they specifically ask you which phenomena exhibits that electromagnetic radiations have wave-like properties, अगर wave nature का पूछें, then remember तुम लोगों ने AS physics के अंदर wave की properties करी थी, और I'm sure आपको याद भी होंगी कि waves are known to undergo interference. If the question asks you which phenomena exhibits wave properties of electromagnetic radiation, you can either mention the term interference. अच्छा, ये भी किया था, diffraction. So you can mention the term diffraction. और ये भी किया था, superposition. तो आप इसमें से कोई भी एक term mention कर सकते हो based on your AS knowledge, which confirms that electromagnetic waves or electromagnetic radiations have a wave-like property. So mention anyone based on AS physics. But if the question asks you which phenomena exhibits that electromagnetic radiations have particle-like properties, then the answer should be photoelectric effect. Okay, so photoelectric effect gives us the evidence for the existence of photons. And since photons interact with electrons, therefore they are known to behave as particles. तो wave nature पूछें तो AS की basis पर कोई भी wave property suggest कर देना. Example could be diffraction, interference, or superposition. और अगर particulate nature पूछें तो उसके अंदर photoelectric effect आ जाएगा. Now, extending this idea further, so later on, scientists also recognized that just like electromagnetic radiations, even electrons exhibit a dual nature. This is a kind of a recent discovery, not very recent, but when I say recent, what I mean by that is कि early 1950s के अंदर 55 में, I think 1955 में या 1954 में इसकी demonstration हुई थी that just like electromagnetic radiations, even electrons exhibit a dual nature. तो इसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के ड्यूल नेचर का एविडेंस कैसे मिलता है. सो पहले वर्डिंग्स देख लेना. It was initially believed that electrons only behaved as particles. That is, they had a particulate nature. However, it was later on established that electrons also exhibit wave-like properties, hence the term wave-particle duality, the dual nature, is also applicable in case of electrons. Okay, then from the next line,
The particulate nature of electrons can be verified by allowing electrons to strike a fluorescent screen. Bright spots of light are observed to be uniformly distributed on the screen. This implies that the kinetic energy of the electrons must be getting converted into light energy as electrons strike the fluorescent screen. Since kinetic energy is a half mv square, so it is associated with mass. Therefore, this confirms the particulate nature of electrons. Okay, so regarding the particulate nature, we can allow electrons to basically strike a fluorescent screen. अभी diagram draw कर देता हूँ. And upon striking a fluorescent screen, bright spots of light are seen to be uniformly distributed on the screen, which implies that the kinetic energy of the electrons must be getting transformed into light energy. Now, since kinetic energy is associated with mass half mv square, so kinetic energy getting converted into light automatically implies that electrons must be having some amount of mass associated with them, and hence this confirms the particulate nature of electrons. तो इसको डायग्राम पे कैसे शो करेंगे ना, I'll move on to that in a bit. एग्जाम में डायग्राम्स भी पूछते हैं alongside the explanation. पहले आगे रीड कर दो. And similarly, the wave nature can be established by making electrons undergo diffraction. And this is referred to by the term electron diffraction. This idea that electrons can undergo diffraction, ये early 1950s के अंदर demonstrate हुआ था. So the first diagram is how to confirm the particle-like properties of electrons. So if they ask you for a diagram ना, तो उसमें देखिएगा मैंने क्या क्या चीजें शो करनी है, और मैं हर चीज की रीजनिंग भी साथ साथ आपको सजेस्ट कर देता हूँ. So diagram के ऊपर you can see the positioning of a heater. Right besides the heater, जो red color से मैं draw कर रहा हूँ, that is your metal filament. Okay, right next to the metal filament, there is a grid. मैं इनका पर्पस एक एक करके बताता चाहूंगा. ग्रिड के बिल्कुल साथ में there is a cylindrical anode which is connected to the positive terminal of a battery. Okay, अब मेटल फिलामेंट का काम है कि जब मेटल फिलामेंट आपका हीट अप होगा ना, because of the heater, so metal filament will start emitting electrons. तो इसने बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को emit करना है. मैं emission of electrons को ग्रीन कलर से बना के दिखा रहा हूँ. So ये आपके इलेक्ट्रॉन्स emit होना शुरू हो गए from the heated metal filament. अच्छा, ग्रिड का काम है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करना है. There is a small opening inside the grid which is used to focus the electrons. अच्छा, एनोड का काम है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड अप करना है. So when these electrons will pass through the anode, so electrons are getting produced from the metal filament because of the heat energy supplied by the heater. The grid is used to focus these electrons into a fine beam. The anode is then going to accelerate the electrons.
And eventually, as these electrons go and strike the fluorescent screen, so you can see on the diagram that the electrons will eventually go and strike the fluorescent screen. So on that fluorescent screen, a bright spot of light is going to be observed. And that bright spot of light implies that kinetic energy of the electron is getting converted into light energy. And since kinetic energy is associated with mass, therefore this confirms that electrons have a particulate nature, that is, they exist as particles. So this diagram over here, इसको मैंने diagram बन करके label किया हुआ है. This diagram can be used as an observation to show that electrons exhibit a particulate nature. So if they ask you for the diagram, just the diagram, then this should be the impression that needs to be constructed. If they ask you for the wordings with regards to the particulate nature, then follow the statement जो मैंने top पे लिखे हुए थे. Now moving on further, electrons के wave nature को कैसे establish करेंगे? So मैं थोड़ा सा इसको scroll up कर दूं, तो second diagram पे move कर जाते हैं. So how to confirm the wave nature of electrons? Okay, so wave nature के लिए भी I'll construct almost the same kind of a diagram as was constructed earlier on. So again, you have the same tube. Tube बनाना इतना relevant नहीं है, आपकी choice है. Okay, once again, you have the heater position. So it's pretty much the same kind of a diagram with a slight bit of a difference. So you have the heater. Okay, then you have the metal filament. This is your diagram too. मैं labeling नीचे करता जा रहा हूँ. Right next to the metal filament, you have the grid. Then you have the anode. This diagram is kind of the same diagram replicated from the previous one. So once again, electrons are getting produced from the metal filament. The grid is going to focus these electrons. The anode will accelerate these electrons. और अब सिंस वेव नेचर के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्रैक्ट करवाना है, तो एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूं. So this vertical line, this was not present in the previous diagram. This vertical line is a carbon film which acts as a diffraction grating. Remember, diffraction was the spreading of light जो AS के अंदर किया था. So as soon as these electrons will go and strike this carbon film, which behaves as a diffraction grating, तो आपके electrons, after passing through the carbon film, spread out करना शुरू हो जाएंगे. And that spreading is going to be evident on the fluorescent screen. So this diagram which I've constructed is basically a side view diagram. और wording नीचे लिख रहा हूँ. Electrons will spread out slash
undergo diffraction as they pass through the carbon film. This indicates पूरा लिख देता हूँ diffraction is a property associated with waves. Therefore, electron diffraction exhibits the wave nature of electrons. So diagram 1, which was the previous wala diagram, उसके अंदर हमारी observation थी that bright spots of light are seen to be unique, and these bright spots were implying that kinetic energy is getting converted into light energy. So since kinetic energy was associated with mass, therefore this provided evidence for the particulate nature. And to confirm the wave nature, this diagram 2 over here is indicating that we are allowing the electrons to strike a carbon film, which behaves as a diffraction grating. So after passing through the film, the electrons are observed to spread out. And since a spreading phenomena is associated with waves, therefore the fact that electrons are undergoing diffraction exhibits the wave nature of electrons. ठीक है? Now, जो मैंने diagram ऊपर बनाया ना, as I said, this is a side view. Sometimes they do ask you specifically to only construct the front view of the screen. तो अगर वो स्पेसिफिकली डिमांड करते हैं ना कि आपको फ्रंट से बनाना है, वरना तो पूरा डायग्राम बना लीजिएगा जो ऊपर बना हुआ था. But this diagram, which I am labeling as diagram 3, this is showing you the appearance of the screen from the front. तो सामने से कैसे लगेगी ना स्क्रीन और ऐसी क्यों लगेगी, उसकी एक जस्टिफिकेशन देख लेते हैं. जब आप फ्रंट से देखोगे ना, तो इट विल अपीयर ये स्क्रीन के ऊपर concentric circles are observed on the screen. Reason, काफी लोग कहते हैं कि सर साइड से तो हमें सर्कल्स नजर नहीं आ रहे, तो मेरा ख्याल है साइड से नजर आ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप साइड व्यू में देखेंगे ना तो आपको सर्कल्स तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन अगर मैं इस डायग्राम को 3D के अंदर बना के दिखाऊं, तो जो डॉटेड लाइंस बना रहा हूं ना, उससे आपको वो सर्कुलर पैटर्न नजर आ रहा होगा. ऑफ कोर्स आप साइड से देखेंगे तो आपको सर्कल्स तो नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट व्यू से डेफिनेटली आपके पास सर्कल्स की ऑब्जर्वेशन होगी. ये क्यों सर्कल्स बन रहे हैं, तो उसकी रीजनिंग भी देख लीजिएगा. इलेक्ट्रॉन diffract in all directions slash in all planes. Therefore, concentric circles are observed. ठीक है, सो अगर आप साइड व्यू देखोगे ना, तो आपको साइड व्यू के अंदर सिर्फ
स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे। साइड से तो सर्कल नजर नहीं आएगा, क्योंकि सर्कल तो आपका मल्टी डायमेंशंस में नजर आ सकता है ना। तो सिर्फ आपको साइड पर से डॉट्स नजर आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप इसको फ्रंट से व्यू करोगे, तो सिंस इलेक्ट्रॉन्स डिफ्रैक्ट इन ऑल डायरेक्शंस, और यू कैन से दे डिफ्रैक्ट इन ऑल प्लेन्स, कॉन्सिक्वेंटली वो जो साइड व्यू से आपको सिर्फ डॉट्स नजर आ रहे होंगे, फ्रंट से ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास पूरा पूरा सर्कुलर पैटर्न बन जाएगा। सही है। सो अगर वर्डिंग्स मांगते हैं तो आप टॉप वाला पोर्शन यूज कीजिएगा, और अगर डायग्राम्स मांगते हैं तो साइड व्यू के लिए डायग्राम 2 है, और उसी डायग्राम को अगर फ्रंट व्यू के अंदर एक्सप्रेस करने के लिए कहते हैं, तो देन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विल सिंपली बी concentric circles are observed on the screen, and the reason behind those concentric circles is that electrons are undergoing diffraction in all directions slash in all planes, therefore concentric circles are observed. जरा 10-12 लोग ओके करते जाना, क्या यू गाइस आर विद मी टिल दिस पॉइंट, ताकि फिर मैं इसकी फर्दर जो एप्लीकेशन करनी है ना उस पर मूव कर जाऊं। तो अभी आज वाली क्लास में हमने ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पहले कर लिया, फिर इसके बाद हमने ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लिया। तब इसी को फर्दर आगे एक्सटेंड करना है। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट चीज देख लो। So once the dual nature of electron was established, comma, there was this scientist by the name of de Broglie, French naam hai. So it's not de Broglie, rather it's de Broglie. So once the dual nature of electrons was established, comma, de Broglie tried to obtain an interrelationship between the wavelength associated with the wave nature, and the momentum associated with the particulate nature. So once the dual nature of electron was established, then de Broglie suggested कि अगर dual nature electrons exhibit करते हैं, then surely electrons के wave nature की वजह से they will have some wavelength associated with them, और electrons के particulate nature की वजह से they will have some kind of a momentum associated with them. So he tried to obtain an interrelationship between the wave nature, the wavelength, and the particulate nature, the momentum. This relationship is known as de Broglie's wavelength, and this relationship is expressed in the form lambda is equal to h upon p, where lambda refers to the wavelength, h Planck's constant, and p in this case refers to the momentum. So de Broglie basically came up with this idea that due to dual nature, we can somehow obtain a relationship between the wave nature, that is the wavelength, and the particulate nature, that is the momentum. So he expressed his equation that we now refer to as de Broglie's wavelength equation. And that equation was given in the form lambda is equal to h upon p. Lambda is the wavelength. पूरा नाम use करना हो तो use the term de Broglie's wavelength. मैं लिख भी देता हूँ. H Planck's constant and p momentum. अच्छा, if you want to further simplify this equation, वो आपकी choice है. So you can even write down the equation in this form. You can break down the momentum. उसकी जगह mv आ जाएगा. So any one of the two forms. अब यार इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है? So imagine if the question is
ये क्वेश्चन बहुत बहुत दफा आ रहा होता है, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, so that the wavelength lambda associated with the electron when it accelerates from rest through a potential difference of V is given by this equation. ठीक है, so the question is saying कि आपने एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से एक्सेलरेट किया through a potential difference of V. So while it accelerates, you are supposed to show that the wavelength associated with that electron is going to be given by this formula. ठीक है, in the formula मैंने symbol साथ में लिख दिए हैं. So lambda is the wavelength, m is the mass of the electron, q is the charge, and v is a potential difference. So ये show कैसे करना है ना? पहला step, start with the basic formula. Potential difference is equal to work done upon charge. So potential difference is capital V. Work done is half mv square. Charge is q. इसमें से make velocity the subject, and this is what you get. तो ये पहला स्टेप हो गया कि start with the basic formula of potential difference is equal to work done upon charge. Replace work done with half mv square. Make velocity the subject. You end up getting this result: 2q capital V divided by m. ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया. नेक्स्ट, as step 2, use de Broglie's wavelength equation. Lambda is equal to h upon p, or lambda is equal to h upon mv. और वेलोसिटी का रिजल्ट रिप्लेस कर दो. सही. सो रिप्लेसमेंट मैं साथ साथ करता जा रहा हूँ, तो आपका वो रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा. अच्छा, दिस क्वेश्चन ऑफ प्रूविंग, जब भी पूछा है ना, प्रूफ करने के लिए पूछा है, सो आई डोंट थिंक आपको लर्न करने की जरूरत है. सो अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे, विच आई एम डूइंग राइट नाउ, सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा. And you should be able to get the final answer. कोई स्टेप रिपीट करना हो ना, बिल्कुल लास्ट वाले स्टेप तक, तो जरा देख लो. सही. सो as step 1, I started with the formula potential difference is equal to work done upon charge. I made velocity the subject. फिर step 2 के अंदर
I used de Broglie's equation. उसके अंदर I replaced the velocity, and if you simplify, you should be able to get the final answer. As I said, फाइनल आंसर को लर्न करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जनरली जब भी उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है ना, आई हैव ऑलवेज सीन देम कि वो शो करने के लिए ही पूछते हैं। तो आई डोंट थिंक इट इज़ रियली एक्सपेक्टेड कि आप इसको लर्न करो। बस प्रूविंग के स्टेप्स याद रख लेना। ठीक है? अच्छा, मासेस जो है ना वो कैंसल आउट हो जाएँगे, तो मैंने वो कैंसलेशन वगैरह शो नहीं करी बिकॉज़ देयर वाज़न्ट मच स्पेस। I just wrote the statement simplified to get the final answer. So I hope you can just coordinate with the working and see for yourself कि फाइनल आंसर इस रिजल्ट के साथ मैच हो जाएगा। नाउ हाउ एल्स कैन वी यूज दिस फॉर्मूला? सो सेकंड एग्जांपल देख लो। सो बेस्ड ऑन दिस आंसर, द क्वेश्चन फर्दर सेज, hence calculate the wavelength lambda associated with an electron if it accelerates from rest through a potential difference of 400 volts. Okay, so the question is asking you what wavelength is going to be acquired by the electron. मैंने ऐसे लिख दिया, ये फाइंड करना है। The wavelength acquired by the electron if it were to accelerate through a potential difference, in this case of 400 volts. So मैं start ऐसे लेता हूँ. From the above derivation, we arrived at the result lambda is equal to h upon under root of 2 times mass times charge times voltage. नंबर्स आप लगा दीजिएगा और वो अली मुझे असिस्ट भी कर देगा. So m refers to the mass of the electron. मैं बस नंबर्स लिख लूं. Q refers to the charge of the electron. Potential difference in the question is given as 400 volts. H is the Planck's constant. Replace कर दीजिएगा. मैं डायरेक्ट आंसर वेवलेंथ का लिख लेता हूँ. सेकेंड पार्ट जब भी आता है ना एग्जाम्स में, so take it for granted कि आपको फर्स्ट वाले पार्ट की वर्किंग करनी पड़ेगी because you are not allowed to use the direct formula. So even if they ask you the second part is the only part, remember कि पहले आपको फॉर्मूला प्रूव करना पड़ेगा और उसके बाद प्लग इन करना पड़ेगा. यूजली फिर वो 5 या 6 मार्क्स का होता है, तो अकॉर्डिंगली आपको आइडिया भी हो जाता है. जी अली, अगर वेवलेंथ का रिजल्ट आ रहा हो ना, तो पहले बता दो, फिर थर्ड वाले एग्जाम्पल को देखते हैं. कुछ आ जाए ना अगर रिजल्ट, तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूँ. एटलीस्ट मैं 10 टू द पावर लगा दूं और मीटर्स लिख दूं, माइनस भी लगा दूं. अम, अ, अली पहले मुझे ओके कर दो, सो आई नो दैट यू आर कैलकुलेटिंग. तो गाइस आई एम वेटिंग फॉर यू. कोई ना कोई सजेस्ट कर दे यार.
ओके, सुलेमान का आ गया 6.1 टाइम्स 10 to the power of -11। थैंक यू यार। ओके, अगला वाला देख लो यार। तो थर्ड वाले के अंदर ये भी एक छोटी सी डेरिवेशन है, अगेन प्रूव करना है। शो दैट द वेवलेंथ associated with an electron is related to its kinetic energy। फर्स्ट एग्जांपल में हमने वेवलेंथ को वोल्टेज के साथ इंटर रिलेट किया था, एंड दिस टाइम वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट दे वांट यू टू प्रूव। तो सिंस एनर्जी को इन्वॉल्व करना है ना, सो बिल्कुल सेम वर्किंग स्टेप वन के अंदर स्टार्ट विद द बेसिक फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल वही काम है जो पहले किया था। So kinetic energy E, and just like the previous example, I'll make velocity the subject. ये आपका step 1 हो गया। And then once again, step 2 के अंदर using de Broglie's equation, lambda is equal to h upon p, or lambda is equal to h upon mv. So once again, I'll replace the value of v. I've done the replacement with the black marker. लास्ट स्टेप की सिंप्लीफिकेशन आप खुद कर लीजिएगा। And this will be the end result. कोई स्टेप रिपीट करना है ना तो जस्ट लेट मी नो। ओके, रोहिल ने लिखा हुआ है रिलेटेड टू मास। सॉरी यार रोहिल, मैं समझा नहीं। नेवर माइंड, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। a proton and an electron accelerates from rest through the same potential difference of v volts. Calculate the ratio of the wavelength associated with an electron upon the wavelength associated with a proton. Basically, the question is asking me कि मुझे ये find out करना है, ratio of wavelength associated with the electron upon the wavelength associated with the proton if they are both accelerated through the same potential difference. तो पहले मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करूं ताकि वो जो फॉर्मूला हमने अभी पोटेंशियल डिफरेंस वाला फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था ना, वो फॉर्मूला पहले मैं मेंशन कर दूं। So from the above working,
we use the formula तो फॉर्मूला देख लो पोटेंशियल डिफरेंस वाला वेवलेंथ के साथ ये फॉर्मूला एसोसिएट हो रहा था मैंने वो ब्राउन वाला सर्कल बना दिया उसके अराउंड h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 mqv अप्लाई करते हैं देख लेते हैं क्या बनेगा फिर यूज करते हैं h अंडर रूट 2 mqv ठीक है अब यार जो रेशो आपको निकालना है ना उसकी वर्किंग में स्टार्ट कर रहा हूँ तो जब आप इलेक्ट्रॉन के लिए वर्किंग करोगे ना तो आपका ये रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रॉन को मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छा वोल्टेज के साथ जस्ट राइट v बिकॉज दे आर बोथ एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस सो वोल्टेज के साथ इलेक्ट्रॉन मेंशन करने की जरूरत नहीं है एंड प्रोटॉन के लिए करेंगे इसको ब्लू से लिख रहा हूँ काफी सारे टर्म्स नोट कीजिएगा कैंसिल आउट हो जाएंगे एक्चुअली मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन ठीक है अब जो टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं ना वो आप देख लीजिएगा एक्चुअली सब कुछ ही कैंसिल हो जाएगा जो बच जाता है ना मैं सिर्फ वो लिख लेता हूँ दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी लेफ्ट ना चार्ज भी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन दे बोथ हैव द सेम चार्ज ना सो चार्ज भी कैंसिल हो जाएगा टू भी कैंसिल हो जाएगा वोल्टेज भी कैंसिल हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट भी कैंसिल हो जाएगा सो ये सारे टर्म्स तो स्ट्राइक आउट हो जाएंगे चार्ज आइडेंटिकल है वोल्टेज भी सेम था टू भी कांस्टेंट है एज भी कांस्टेंट है सो फाइनल आंसर ये आ जाएगा सो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइनल आंसर हाँ रोहेल ने सही लिखा था सलेमान ने लिखा हाउ इज मास नॉट कैंसिल्ड यार मासेस डिफरेंट होंगे ना सलेमान प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का अरीज ने पूछा हुआ है वोंट वी कंसीडर द साइन ऑफ द चार्ज वेवलेंथ निकालनी है अरीज वेवलेंथ स्केलर तो स्केलर क्वांटिटीज में प्लस और माइनस लिखने की रेलेवेंस नहीं होगी ना सो वेवलेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी सो इसलिए मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया ठीक है और बाकी रोहिल का स्टेटमेंट सही था ओनली मास इज डिफरेंट सो रेशो में फिर साइंस की जरूरत नहीं है कंसिडर करने की ठीक है बिकॉज वेवलेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी तो बीइंग अ स्केलर माइनस की रेलेवेंस नहीं होगी ओके कुछ आंसर अगर आ जाए तो ये लिख लूं हाँ सलेमान अगर पहुंचे हो तो 40 समथिंग 43 लिख देता हूँ इस टू वन ओके 43 आ रहा है सही है नेक्स्ट वाला देख लो
Okay. Um, an electron accelerates through a potential difference V and undergoes diffraction after passing through the carbon film as shown. ठीक है, so diagram आपके पास given है. This is the exact same diagram जो मैंने आज वाली क्लास के beginning में explain किया था. And the side view is given to you. Suggest and explain what changes uh, in the appearance on the screen is expected if the potential difference um, accelerating the electron is increased. For example, from V, it becomes 2V. Okay, so if you increase the potential difference through which the electron is accelerating, so how would that affect the appearance on the screen? See, तो अगर आप वोल्टेज को V से चेंज करके डायग्राम पे शो भी कर देता हूँ, इस तरह बना देता हूँ कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस को V से चेंज करके 2V कर दिया, something like this. The voltage has been up from V, it has taken down to 2V. So how would the appearance change? अब इसके आंसर को आपने किस फॉर्म में देना है? मैं इंडिविजुअल पॉइंट्स लिख रहा हूँ. According to the formula, voltage is equal to work done upon charge as potential difference increases, comma, the electron will achieve a higher speed. ठीक है, फॉर्मूले से देख लो, as potential difference increases, the speed will also increase. Okay, second point. According to de Broglie's equation, lambda is equal to h upon mv. As speed increases, the wavelength associated with electron will decrease. ये second statement हो गया. Last वाला statement. ये formula I'm hoping कि आपको शायद याद रहा होगा. AS में किया हुआ था. जिनको याद आ जाए तो मैंने इसीलिए मेंशन कर दिया है कि होपफुली याद अगर नहीं होगा तो आप देखेंगे d sin theta is equal to n lambda, तो शायद आप रिकॉल कर लेंगे. So based on the diffraction formula, d sin theta is equal to n lambda, as
wavelength decreases, the angle of diffraction, theta, also decreases. Hence, अब फाइनल कंक्लूजन लिख रहा हूँ, जो ब्लू वाले मार्कर से लिख रहा हूँ ना, वो मेरा फाइनल कंक्लूजन है. द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स will now move सही है ना. अच्छा रोहिल, क्वेश्चन में लिखा था सजेस्ट एंड एक्सप्लेन, क्वांटिटेटिवली नहीं लिखा था, तो इसीलिए मैंने क्वांटिटीज रोहिल नहीं मेंशन करी है. ठीक है, सो कितने फैक्टर से चेंज आएगा ना, वो मैंने मेंशन नहीं किया है, बिकॉज द क्वेश्चन वाज नॉट आस्किंग कि आपको क्वांटिफाई करना है. सो मैंने बस आंसर को 3 पॉइंट्स में, 3 फंडामेंटल पॉइंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया. तो द फर्स्ट पॉइंट वाज सजेस्टिंग कि इफ यू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, द स्पीड of the electron will also increase. Then based on de Broglie's equation, the second statement was suggesting that a higher speed is associated with a shorter wavelength. So wavelength decrease karegi. And then the last statement, that was the diffraction formula जो AS में किया हुआ था, d sin theta is equal to n lambda. So as wavelength decreases, इसके साथ भी arrows बना देता हूँ. As wavelength decreases, the angle theta of diffraction also decreases, and a lesser diffraction का मतलब है कि you would now expect the concentric circles to move closer than before. तो वो मैंने फाइनल आउटकम के अंदर लिख दिया है कि the concentric circles will now move close together. See, जी ज़्यादा concentrated हो जाएंगे if you want to use that term. See, so the concentric circles will get an opportunity to come close together, or you can say lesser degree of spread होगा, or you can use the term कि वो ज़्यादा concentrated हो जाएंगे. All right. अब इस टॉपिक की जो फाइनल थ्योरी रह गई है ना, इसको भी करा के कंप्लीट कर दूं. This is the last working, and this comes under the heading of concept of photon pressure. तो आई थिंक अगर आप इस टर्म को recognize करो, so you would all appreciate that since we have already established that photons exhibit particle-like properties, तो इसकी बेसिस पर आई एम श्योर यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि अगर आपकी लाइट किसी मेटल के सरफेस पे फॉल करती है, तो यू नो अगर आप डायग्राम पे देखते हैं कि मेरे पास एक लाइट का सोर्स है और एक मेटल का सरफेस है, मैंने लाइट की वेवलेंथ प्रोवाइड कर दी है 560 नैनोमीटर्स, और मैंने लाइट का पावर प्रोवाइड कर दिया है. तो अगर आप एक लाइट के सोर्स को किसी मेटल के सरफेस के सामने ले जाकर एक्सपोज करोगे, तो आई एम श्योर यू वुड एग्री that the amount of light that is going to fall on the metal surface on a certain area मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है. So since light or electromagnetic radiation consists of photons, लाइट को
किसी मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट करोगे ना, इसका फिजिकली मतलब ये बन रहा है कि लाइट के फोटॉन्स ने आकर आपके मेटल के सरफेस को स्ट्राइक करना है। अब इफ photons exhibit particulate nature, then we are good to say that the arrival of the photons on the metal surface implies कि particles, that is photons, आपके मेटल के सरफेस के साथ कोलाइड कर रहे हैं। अब जब भी कोई पार्टिकल किसी सरफेस के साथ कोलाइड करता है, तो हमारी फिजिक्स की थ्योरी कहती है हमें कि आपके सरफेस के ऊपर फोर्स लगना चाहिए। और जब भी फोर्स एक्सर्ट होता है ओवर अ सर्टेन एरिया, then force exerted per unit area gives rise to pressure. ठीक है, so the term concept of photon pressure arises because of the fact that since photons exhibit a particulate nature, so if light from any source is made to strike a metal surface, then it's basically the incoming photons that are going to strike the metal surface. And since photons exhibit particulate nature, so as particles are going to strike the metal surface, they are going to exert a certain amount of force. And that force exerted by the photons over a certain area gives rise to pressure, and hence the term photon pressure. You might argue कि सर ये प्रेशर बहुत कम होगा, and rightly so, कि वाकई में बहुत कम होगा, है ना? Not even so much so कि आप इसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सको, बट nonetheless ये होगा, इससे कोई डिनायल नहीं है। So how can we work out the value of this photon pressure? उसके लिए मैंने आपको कुछ डिटेल्स दी हुई हैं. So I've given you the wavelength, I've given you the power of the light produced from the source, दो चीजें. I've given you the area on which the light is exposed, तीन चीजें. So how can we work out the photon pressure? उसको देख लेते हैं. तो मैं स्टेप वाइज कैलकुलेशन के नीचे स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो आप वो मेरे साथ साथ फॉलो कर लेना. Starting with the first thing, calculate the energy of a photon. So photon energy was E is equal to hf, or E is equal to h times c upon lambda. वैल्यूज में लगाता जा रहा हूं, तो प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया. C is the speed of light. Lambda is the wavelength of light, which is 560 nanometers. फाइनल आंसर्स के अराउंड बॉक्स बनाता जा रहा हूं. मोहित ने लिखा हुआ है कि will it be directly proportional to the intensity of light? Yes. So जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी, उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स अराइव करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा. बिल्कुल. कितना बन रहा है आंसर? जरा ये देख लेना सलमान, इफ यू देयर. ओके, जब तक मैं ये आंसर लिख रहा हूँ ना, आई थिंक 10 टू द पावर ऑफ -19 में ही आ रहा होगा. कितना आ रहा होगा वो भी देख लेते हैं. 3.55. ओके. सेकंड पार्ट, calculate the number of photons reaching the metal surface per unit time. So how many photons are going to reach the metal surface in a time of 1 second?
So let's start with the basic formula. ये formula previous classes में भी हमने किया था. ये intensity का formula was total power. बल्कि ऐसे लिख लेता हूँ. Power is equal to total energy upon time. अब जरा सिंबल्स देख लीजिएगा. पावर को P कर देता हूँ. Total energy can be written as follows. Energy of a photon multiplied by number of photons. Symbols में identify कर दूं. जगह जरा कम है ना, तो इधर ही लिख देता हूँ. ठीक है. सो पावर इज टोटल एनर्जी अपॉन टाइम. मैंने टोटल एनर्जी को ब्रेक डाउन कर दिया है. तो टोटल एनर्जी is basically a product of these two things. And the total energy will be energy of each photon multiplied by the number of photons divided by time, which is 1 second. The power is given to you in the question as 2.7 milliwatts. Number of photons find out करने हैं. Energy of each photon का आंसर सुलेमान ने ऊपर दिया था. Per unit time. So that is 1 second. So this answer written with the green marker refers to the number of photons striking the metal surface per unit time. P is the power of the source. Yes. So P is the power of the light source. बिल्कुल. 7.5 10 to the power of 15. ठीक है. Third part में calculate the momentum of each photon. So momentum के लिए de Broglie equation. The wavelength is 560 nanometers. Next line में ही लिख लेता हूँ. So this gives me momentum of each photon. Okay, ये अभी स्क्रीन पे नहीं आ रहा.
यार मैंने यूनिट्स लिखे हैं, तो आप जरा प्लीज यूनिट्स को देख लीजिएगा कि अगर आपको उसमें तो कोई इशू नहीं है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो वाले मार्कर से, आप जरा यूनिट्स देख लो। आई डोंट थिंक जूल्स विल बी एन इशू। आई डोंट इवन थिंक S-1 शुड बी एन इशू, है ना। अगर S-1 जज करना मुश्किल हो तो क्वेश्चन की वर्डिंग्स रीड कर लो, तो S-1 समझ में आ जाएगा। और मोमेंटम के तो यूनिट्स आप AS में करते थे, तो आई एम होपिंग कि न्यूटन सेकेंड्स आपको याद होगा। सो मोमेंटम का रिजल्ट आ रहा है 1.2 कर देता हूँ, टाइम्स 10⁻⁻27। परफेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट देख लो। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम of all the photons arriving per unit time. So स्टेटमेंट के बजाय सिंबल्स की फॉर्म में लिख लो ना। तो टोटल मोमेंटम विल बी दिस आंसर, सिंबल्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ। So NP is a number of photons arriving per unit time, and P is the momentum of each photon. Saying so the total momentum of all the photons arriving per unit time. So that should be the product of the two previous answers. The green one, 7.5 into 10 to the power of 15 per second, multiplied by the blue one. In case if you're wondering कि मैंने units क्यों लिखे हैं, मैंने units actually आपकी आसानी के लिए लिखे हैं, ताकि जब आप units को देखोगे तो आपको recognize हो जाएगा कि the multiplication is actually going to give me an answer whose final units are going to be newtons. The answer which I'll get. काफी लोग कहते हैं सर this is the answer of momentum per unit time. ये बात बिल्कुल सही है. This is the answer of total momentum per unit time. Definitely. You can't ignore कि AS के अंदर total momentum per unit time was also known as rate of change of momentum, which was actually equal to force. So yes, the answer which I'm getting is actually the answer for total momentum per unit time, no doubt. But that's another way of saying rate of change of momentum, hence the term force. So किसी ने multiply I think कर दिया है, और मेरे force का आंसर आ रहा है 8.9 times 10 to the power of -12. ठीक है, so this is the answer for the total momentum of all the photons arriving on the metal surface per unit time. So you can either call it as total momentum per unit time, or you can simply refer to this as force, because force is momentum upon time. Or last part में, since we were interested in getting the answer for pressure, so next part में, assuming that all these photons are absorbed by the metal upon impact, calculate the force. So same answer as part 4.
because force is equal to a rate of change of momentum. और बिल्कुल फाइनल पार्ट के अंदर hence calculate the photon pressure. अच्छा, आज का काम मैं काफी स्ट्रेच करता करता एक ही स्लाइड पे ले गया हूँ। मुझे लगता है एक स्लाइड पीडीएफ पे होगी नहीं, तो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। मुझे बता देना कहाँ तक हुई है, ताकि फिर उसके बाद वाले को मुझे सेकंड पेज पे करना पड़ेगा। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। Area was 1.6 times 10 to the power of minus 5. तो प्रेशर का फाइनल आंसर कुछ आ रहा हो तो बता दीजिएगा। मैं यहाँ कंक्लूड करूंगा, लेकिन 5 मिनट जरा रुक जाना, ताकि जब ये अपलोड हो रहा हो ना, तो मुझे जरा सजेशन दे देना लास्ट स्टेटमेंट कहाँ तक आया है, ताकि फिर मैं सेकंड वाली स्लाइड को उसके हिसाब से अपलोड कर दूं। Okay, this result is coming out to be 5.6 into 10 to the power of minus 7 pascals. ठीक है guys. So this concludes the working of photoelectric effect. अब give me a 5 minutes or so. So मैं देख लूँ। ट्राई करते हैं। जी, अली या रोहेल या सलेमान या आयशा या अरीज, तुम लोगों में से कोई जरा गूगल क्लासरूम पे जाओ, या उमर, और मुझे एग्जैक्टली बताओ किस पॉइंट तक आया है। यस मोहम्मद शोएब, दे आर। सो दिस कंक्लूड्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का काम। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वांटम फिजिक्स के जो 2 सब टॉपिक्स और बाकी हैं, एक एक क्लास के हैं दोनों, तो वो करा दूंगा। ऑलराइट गाइस, सो टेक केयर एंड खुदा हाफिज फॉर टुडे।